ओके सो आज हमने पेपर 4 के कुछ क्वेश्चंस करने एज फार एज मोल इज कंसर्न और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आफ्टर दिस वी विल गो थ्रू एनी प्रॉब्लम्स दैट यू माइट बी हैविंग और फ्रॉम मोल एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे. ओके सो स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ सैंपल ऑफ बेरियम सल्फेट. ठीक है, बेरियम सल्फेट हमें पता है इट्स एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो प्रेसिपिटेशन मेथड यूज किया होगा. दो सॉल्युबल सॉल्ट दिए होंगे उसने, तो यहाँ पे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और बेरियम नाइट्रेट है. These are soluble salts. Sulfuric acid here is not acting as acid, it is acting as salt. और इससे हमारे पास ये solid बना होगा, which obviously will then be filtered. अच्छा जी, अब information हम देख लेते हैं. Usually I just write the information with them. So barium nitrate के बारे में हमें ये पता है कि उसकी concentration is 0.25 और उसकी volume is 60 और इसकी concentration is 0.2 और उसकी volume है 100 cm cube में. Okay. Now describe the appearance of barium sulfate. Barium sulfate, we know it's a solid, and secondly, barium sulfate is what you call it is insoluble salt, so white solid hoga. Very good question, Minahil. Minahil is asking, how do we know whether it's acting as acid or salt? So when it's acting as acid, तो हमने 4 reactions पढ़े थे जो acids को डिस्क्राइब करते हैं. अगर मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे तो एसिड है. अगर बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाए एसिड है. अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे एसिड है. ठीक है, कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल के साथ हाइड्रोजन और बेस के साथ वाटर, ये 3 चीजें अगर करता है कोई तो वो एसिड है. उसके अलावा कोई भी रिएक्शन हो रहा है वो एसिड को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो सॉल्ट वाला बिहेवियर कर रहा है. तो सल्फ्यूरिक एसिड कुछ भी और करता है तो वो एसिड वाला रिएक्शन नहीं है, वो कुछ और सॉल्ट हो सकता है, वो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है. लेकिन एज बीइंग एन एसिड उसकी बिहेवियर इन्हीं 3 प्रोसेस से हमें पता चलता है. ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन पता है. आई ऑलवेज राइट द इंफॉर्मेशन विद द सब्सटेंस, दैट वे इट्स इजियर फॉर मी टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. आई नो इट्स अ सॉल्यूशन, तो n इक्वल टू Cv. नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.2 टाइम्स 100 over 1000. डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय 1000. Why? Because it is in cm cube and we need to convert it to dm cube. So based on that, I will get 0.02, I think. Yeah, 0.02 moles per dm cube. And that is my answer here. ठीक है. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट. बेरियम नाइट्रेट की इंफॉर्मेशन है, n इक्वल टू Cv करते हैं. C is 0.25, B is 60 over 1000. So this will come out to be 0.015. जरा एक सेकेंड के लिए इनको कंपेयर करें. मोल रेशियो इज 1 to 1. इसके मोल्स हैं 0.02 और this has moles 0.015. Clearly this is less, and the moment you see this you should realize that the limiting reactant is barium nitrate, and only the limiting reactant determines what will be made. All right, so that's how we go. And because this is a limiting reactant, will decide how much product is made. So we can see that if 1 mole of this is made, 1 mole of that will be made. We'll ignore sulfuric acid. Why? Because it's the thing in excess. ठीक है, उसके मोल्स ज्यादा हैं, इसके मोल्स कम हैं, तो वो excess में will ignore that. Okay. Using your answer to B1 and 2, calculate the maximum mass of barium sulfate. अब यहाँ पे 2 points समझने वाले. First of all, why are they saying B1 and B2? Because B1 and B2 will tell us from these 2 values which is in excess. Sulfuric acid has a higher value, barium nitrate has a lower value, so clearly we know that this is the limiting reactant. And इसके limiting reactant होने की वजह से barium sulfate इतने ही moles बनेगा जितने moles ये है, तो 1 to 1 की ratio. So we know that barium sulfate will be 0.015 moles. और mass क्या होता है? Moles is mass over mr, तो mass is mole multiplied by mr. तो mr कैलकुलेट कर लेते हैं. barium sulfate is Ba plus S plus 4 times 16 for oxygen. So 0.015 times 233. So my answer is 3.495 grams. Okay, I did not approximate it and I will not. मैं फाइनल आंसर पे जाके अप्रोक्सीमेशन देखूंगा, अभी मैंने इसको ऐसे ही छोड़ना.
Okay, barium sulfate was removed from the solution by filtration. Kyun? Because it's insoluble, and then it was washed, it was dried, and then it was weighed. देखें एटीपी के क्वेश्चन में कहीं पर भी मेथड आ गया तो आपने फौरन जेन में सोचना है कि एरर यहां से आएगा. रिमेंबर दिस, एग्जामिनर आपको बाद में टेस्ट भी करता है. द मोमेंट यू सी मेथड यू शुड ट्राई टू लुक फॉर अ सोर्स ऑफ एरर. जैसे यहां पे हमें नजर आ रहा है कि इसने फिल्टर किया है, ड्राई किया है, फिर वे किया है. यानी कि वे करने के लिए उसका ड्राई करना ठीक होना जरूरी है, उसका फिल्टर सही करना जरूरी है. अच्छा, फिल्ट्रेशन तो ऑब्वियसली उसमें गलती का चांस ही नहीं है क्योंकि ही इज जस्ट गोइंग टू पुट इट ऑन द फिल्टर पेपर एंड फिल्टर पेपर इज गोइंग टू डू द वर्क. बट ड्राई करने में स्टूडेंट का अपना रोल है. द स्टूडेंट इफ ही इज इन अ हरी, वो कहे मुझे तो ड्राई लग रहा है एंड ही स्टॉप्स, सो दैट शोज कि उसने गलती कर दी. ठीक है. सो पेपर 4 की आपकी जो एक इंपॉर्टेंट टिप अगर मैं आपको दूं तो वो होगी कि wherever you see a method look for an error. So यहां पे हमें नजर आ रहा है that the student if they don't dry properly they will not get the correct weight. तो उनका एरर आएगा. आगे चलते हैं. The mass of barium sulfate obtained was 3.35. Calculate the percentage yield of barium sulfate. So that's pretty straightforward. We calculated this. Our predicted value is 3.495, but actual value is 3.35. So yield is going to be 3.35 divided by 3.495 times 100%. If you are going to do ratio method, then we'll say that 100% will be 3.495 and X% will be 3.35. So I'll just solve this and I'll get 95.9%. That's my percentage yield. Okay. Another student doing the same experiment and using the same quantities. Same quantities. Now remember, quantities का मतलब है moles भी same है, volume भी same है, concentration भी same है. Anything that is there is the same. ठीक है? And then what happened? They did the same thing with the same quantities. Of course, they should expect the same amount, but they obtained 3.6 grams. The other guy, they obtained 3.35. This guy has obtained 3.6 grams. What is an increase in mass? If they're using the same quantity, then their method is flawed. जो ये extra mass आया ना, इन्होंने कोई गलती की है. Can anybody tell me क्या गलती की होगी? It wasn't dried. It wasn't dried properly. Exactly. The extra mass that they're seeing, that is the mass of water. So we'll say that it wasn't properly dried. Sir, what if one is in powder form and one is crystal? If it is crystal, then it has water of crystallization in it. So it's not dry. Unless you're saying dry crystals. So of course, then it's fine. But if you have dry powder and if you have crystals, crystals will weigh more. Crystals will have water crystallization in them. Okay. Suggest a different barium salt that could have been used instead of barium nitrate. Okay, so this is precipitation, right? In precipitation, we need this to be soluble, this to be soluble. So can you think of any barium salt that is soluble except nitrate? Barium chloride. Very good. Barium chloride will also be a soluble barium salt. So we can just say that. अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है suggest. That means they have not specified whether you need to name it or whether you need to write the formula. Suggest का मतलब है बस उसका बता दे मुझे. हाँ, अगर if they wrote name a different salt, then we will write the name. Formula will be the wrong answer. Okay, so if they said suggest या state, that means आप कुछ भी लिख सकते हैं. So if you are confident कि उसका formula क्या है, only then write the formula. अगर आपको लगता है कि उसका salt ये है और आप ये लिख देते हैं तो ये गलत होगा क्योंकि the formula is not correct. The actual formula is BaCl2. So the safe answer would be barium chloride.
लेकिन हम लोगों ने ऐसे वैसे सॉल्ट पढ़े हुए हैं, हमें मोल्स भी आते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. बट लेट्स से अ स्टूडेंट राइट्स दिस. अब इट्स अप टू द एग्जामिनर टू चेक कि ये आंसर ठीक है या नहीं है. बट हियर्स द थिंग, थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट. अगर आप एग्जामिनर होते और आपके सामने ये आता, तो अब आपके पास चॉइस है, या आप इसको कंसिडर करें और इसको रिजेक्ट करें, या आप इसको कंसिडर करें और इसको रिजेक्ट करें. बट एज एन एग्जामिनर आपका काम क्या है? फर्स्ट वाला चेक करना. आपका काम ये है कि आप चेक करें कि बच्चे को केमिस्ट्री आती है या नहीं आती. ये आपका काम नहीं है कि आपने नंबर्स देने. नंबर्स तो उस बच्चे का हक है, वो तो आपने देने ही है अगर उसके बनते होंगे. But as an examiner, you have to check whether the student understands and is able to communicate chemistry. And this student, unfortunately, is not. And secondly, when you're checking कि ये ठीक है, you're also rejecting this. आपको किसने ये right दिया कि आप student की बात को reject करें? You don't have that right as an examiner. And this is one of the key rules. There are 7 rules that as an examiner we have to follow when we are checking exams. And one of those rules is you will not choose the answer. तो एग्जामिनर चूज नहीं करेगा, वो यहाँ पे बता ही नहीं सकता कि बच्चे का आंसर ठीक है कि नहीं है. बच्चा खुद कंफ्यूज है. सो ऑलवेज राइट समथिंग यू आर श्योर ऑफ एंड नेवर राइट 2 आंसर्स, क्योंकि एग्जामिनर चूज नहीं कर सकेगा. ईदर यू पुट दैट और यू पुट दिस, और उसको ऑब्वियसली सही फॉर्मूला लिखें. अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता ना लिखें, क्योंकि आपको ऑप्शन दी है सजेस्ट. ओके, मूविंग ऑन. A student did an experiment to decompose hydrogen peroxide. ठीक है. All right. 100 cm cube इसकी volume है, and concentration is 0.05. Allowed to decompose until no more oxygen. So oxygen की volume हमने calculate करनी है. ठीक है, बहुत आसान stoichiometry का problem है. 2H2O2 makes O2, volume of gas यहाँ पे होगी, और ये moles होंगे क्योंकि solution है, aqueous है. Okay, so 2 moles produces 1 mole of that, which is 24 dm3. 1 mole की वैल्यू क्या है? 24 dm3. क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है. एंड देन इसको हम देख लेते हैं 100 over 1000 into 0.05. ठीक है. So x and we'll cross multiply it. So 2x will be 24 into 0.1 into 0.05. X will be all of this divided by 2. So 0.1 times 0.05 times 24 divided by 0.06 dm cube. ठीक है. तो जब ये 0.06 dm cube हो गया है, तो you'll convert it to cm cube, and that is B. B is your answer. ठीक हो गया? Any question on this? I hope everybody understands this. Stoichiometry. All right. A question that is very similar to the previous one. Okay, so please tell me the answer to the first question. What color is the precipitate? Precipitate मतलब जो भी यहाँ पे बना है, which is silver bromide. So बताइए, what color is the precipitate? Bromide है, उसकी वजह से color आएगा, and silver भी है. So बताइए, what is the precipitate's color? If you are not sure, then remember, chloride, bromide, iodide, they are all in group 7. ठीक है. And that means that their color will darken down the group. Okay. All right. So chloride is white, bromide is off-white, and iodide is yellow. यानी कि उनके salts. Minahil, your answer कि अच्छा ये Minahil's comment is that when you write your answer, first answer is checked. That happens जब उसने आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया हो जिसमें उसने कहा हो कि जी लिस्ट डाउन 4 मेथड्स या लिस्ट डाउन 3 सॉल्ट्स, ये वो. अब उसमें वो फर्स्ट 3 को चेक करेगा. आप 5 लिखेंगे ना, उसने आखिरी 2 इग्नोर कर देना, और फर्स्ट 3 में से अगर कोई गलत हो गया तो गलत हो गया. जब इस तरह के आपके कोई आंसर होंगे जहां पे वो कहते हैं जी गिव 2 यूजेस या
गिव टू रिक्वायरमेंट्स है इस तरह करके, तो उसमें वो फर्स्ट वाले चेक करता है, बाद वालों को वो चूज नहीं करता। लेकिन अगर आपने 2 आंसर्स खुद से लिखे हैं, उसने मांगा एक था, आपने अपनी तरफ से 2 लिखे हैं और उनमें से कोई गलत है, तो इट इज अ रूल इन कैम्ब्रिज दैट एग्जामिनर शुड नॉट चूज। अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ गई, कोई आंसर उसने 2 आंसर दे दिए, एक गलत है एक सही है, तो आपको गलत वाला गलत ही होगा। हाँ, एक और बात, अगर कोई बच्चा एक ऐसा आंसर देता है जिसका उसके ताल्लुक ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी कि गिव 1 सॉल्ट ऑफ बेरियम, और बच्चा लिख देता है एक्वस बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट इज सॉल्ट ऑफ बेरियम, क्वेश्चन ने उसने कंफर्म कर दिया ना, आंसर दे दिया, लेकिन बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, तो एक्वस तो होता नहीं है वो। But because that aqueous part was not tested in the question, the student will get marks. ठीक है, so relevancy भी एक requirement होती है। खैर, we'll talk about it जब हम पास्ट पेपर सेशन करेंगे, उसमें मैं आपको सारे बताऊंगा इनके रूल्स के किस किस तरह से होते हैं, ताकि आपने आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो हम पास्ट पेपर सेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चंस। What color was the precipitate? The color was off white. Okay, if you want you can also write cream. ठीक है, give any one of these answers. Name the method by which this precipitate was separated. The word precipitate is a big hint that this is insoluble, and we will do filtration. Okay, calculate the number of moles of silver nitrate contained, और आपको उसने दोबारा, कितनी बड़ी नेकी है, he has given you the values again, you don't have to go back. So there you go, it's pretty straightforward. Number of moles is concentration times volume. It's gonna be 1.5 times 30 over 1000. So the answer will be, I think, 0.045. Yes, 0.045 moles. Of course, एक मार्क का क्वेश्चन है, तो आप अगर सिर्फ ये भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे. You don't need to show all the steps. I will still show it if I were you. Calculate the number of moles of sodium bromide contained in 50 cm cube. Again, very similar to the previous question. We'll do n equal to CV again. 50 over 1000 times 1, so 0.050 mole. Okay, so that's my second answer. All right, you can clearly see that one of them is limiting and the other one is in excess. अच्छा जी, ये आपके पास मोल रेशो आ गई है, 1:1 की रेशो है, तो pretty straightforward. Using this equation, calculate the mass of silver bromide produced in this experiment. ये हमारा प्रोडक्ट है, लीस्ट प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, the one that is less in amount, and because the mole ratio is the same, it makes things much easier to solve. ये मोल यूज करेंगे, तो ये है this thing, so this is limiting. So I'll just say कि जो इसके moles हैं वो इसके moles हैं, 1:1 की ratio है, तो moles is going to be 0.045, and MR is going to be, silver is 108, BR is 80, so 0.045 times 188. 8.46 grams. I have no idea why they've given this much space. Maybe अगर कोई गलती कर जाए. Okay. The student repeated the experiment using 40 cm cube of silver nitrate with 50 cm cube of this. पहले उनके पास 30 cm cube था. Now they have 40 cm cube. So clearly उनके moles increase हो जाएंगे. So let's me check. दूसरे के moles उतने ही हैं, क्योंकि दूसरे की values भी उतनी हैं. तो अब moles is going to be 40 over 1000 into 1.5. 1.5, ये 0.06 आएगा. So अब compare करें. Silver nitrate is 0.06 and sodium bromide जो हमने अभी देखा था वो 0.05 था. So clearly now this is the limiting reactant. So now the mass produced will change and the mass will be 0.05 times 188. Okay, because our limiting reactant has changed. So 9.4 grams.
So because the limiting reactant changes, you get a different. अच्छा अब देखें जैसे उसने यहाँ पे दे दिया यूनिट, आपने भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स irrelevant to this. तो आपको कोई मार्क्स लूज या गेन नहीं होंगे. लूज तो वैसे भी नहीं होते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं. Alright, does everybody Sir, understand this? Yes, Iman? can you explain this part again? Yeah, sure. So we have two things here. One is silver nitrate, जिसके शुरू में मोल्स थे 0.45 और ये था 0.05. सो हमें नजर आ रहा है कि ये कम है इससे, और मोल रेशियो है 111. सो ये कम है, तो दिस विल डिसाइड हाउ मच सिल्वर ब्रोमाइड इज मेड. सो इन दिस सिचुएशन 0.045 moles of silver bromide will be made. But in the next part, D part, things have changed. अब हमारे पास 0.06 moles ये है और 0.05 moles ये है. So जो लॉजिक हमने इस पे अप्लाई करके इसको चूज किया था, अब हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, and we can see that this is the limiting reactant now. In this situation, this is lesser moles, the other one is higher moles. So now product will be 0.05. Basically हम इसको दोबारा कर रहे हैं with different amounts. Does that make sense? Yes, sir, now it's clear. Perfect, perfect. Water of crystallization, please focus on this. ये देख रहे हो, ये जो डॉट है यहाँ पे, this dot is telling me कि they have covalent bond. And बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, बट इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है. बाय द वे, पीपल हु टुक द बॉन्डिंग वाली क्लासेस, मुझे बताएं व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज हियर बिटवीन इन सोडियम कार्बोनेट, व्हाट बॉन्ड इज देयर? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है, गलत जवाब ही दे दो. सोडियम आयन है, कार्बोनेट आयन है, कौन सी बॉन्डिंग करेंगे ये दोनों? Ionic. आयनिक, परफेक्ट. बट कार्बोनेट आयन कैसे बन गया? दो नॉन मेटल्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? Covalent. Covalent. And because of something that we don't need to study at the moment in O levels or IGCSE, उस पे आयन आ गया, उस पे चार्ज बन गया. So sodium carbonate में carbonate has covalent bonding inside and it forms ionic bonding outside. And in fact, any polyatomic ion does the same thing. Polyatomic ions मतलब अमोनियम, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, नाइट्राइट, सल्फाइट, सल्फाइट, वो सारे जो हैं, they have covalent bonding inside and ionic bonding outside. And then of course ये further dot का मतलब है कि उसने further water के साथ covalent bond बना दिया. ठीक है. Where x is a whole number. Whole number का मतलब ये हुआ कि 1 mole ये और x mole ये, तो एक तरह से 1:x moles की रेशियो यहाँ पे आ गई है. हमने किस टॉपिक पे मोल्स की रेशियो की बात की थी, किसी को याद है? मोल्स की रेशियो की हमने कब बात की थी? एम्पेरिकल फॉर्मूला में. एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम क्या करते थे? मैथ्स निकालते थे, फिर एमआर से डिवाइड करते थे, फिर उसको सिंप्लीफाई करते थे. देखना इस क्वेश्चन में यही करवाएगा वो आपसे. मैथ्स निकलवाएगा, एमआर से डिवाइड करवाएगा, मोल्स निकालेगा, और मोल्स की रेशियो से हमें एक्स मिल जाएगा. बहुत क्लियर हमारे सामने नजर आ रहा है कि मेथड क्या है हमारा, और ये इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दैट इज द ओनली वे वी कैन फिगर दिस आउट. मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप रट्टे मारो या इन हिंट्स को जेन में रखो कि ओ ये आया सवाल तो मैंने ये करना है. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. आई एम जस्ट सेइंग कि ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू वर देयर इंस्टेड ऑफ दिस स्टूडेंट, आप भी यही करते. अपने एक्स की मोल्स निकालनी है और देखना है कि वो 1 मोल हो, ये एक्स मोल्स हो, तो रेशियो ही निकालनी है आपने. और पहले आपको मोल्स चाहिए, फिर उनकी रेशियो निकालेंगे आप. मोल्स कैसे मिलेंगे? मैथ्स ओवर एमआर से. ठीक है. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस ना, तो क्वेश्चन विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू. और उसका तरीका क्या है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट? इसको बोलते हैं इंट्यूशन. इंट्यूशन ये होती है कि आपको चीज को देखते साथ समझ आ रही है कि ये ऐसे होना है. ठीक है. और वो कब पता लगेगा? जब आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आज मैं आप लोगों को 35 पेजेस की पेपर 2 की वर्कशीट भेज रहा हूं. उसका मकसद ये नहीं है कि आपने सारी वर्कशीट करनी है. उसका मतलब सिर्फ इतना है कि डू इट जब तक आपकी इंट्यूशन बिल्ड नहीं हो जाती. मास्टरी लर्निंग करनी है आपने. मैंने उस दिन आपको बताया था वो क्या होती है. ऑलराइट, कमिंग बैक टू दिस. कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स. सो दिस इज द मास with crystal and container, and this is the mass of the container.
So दोनों को subtract कर देंगे. So 9.87 minus that, I think 4.04 grams. ठीक है. So this is mass of crystals. The container and crystal were heated to remove water of crystallization and then reweighed. The process was repeated until there was no further change. G, if you read it, do you see any chance of error? Method है ना? Method में error होता है. तो बताएं कहाँ पे error हो सकता है? What is an error that could be there in this method? They heated it so that water was removed and then weighed it again. Obviously, they have to heat it to a certain extent. अगर सारा water नहीं निकलेगा तो error आ सकता है. एक ये बात. दूसरा, why? अच्छा, ये एक थोड़ा सा advanced question करने लगा. Why will this method work for removing water of crystallization, but the same method with calcium carbonate will not work? If calcium carbonate had water of crystallization, this method will not work. Kyun? Because when you heat sodium carbonate does not break down, only water evaporates. But when you heat calcium carbonate, the carbonate also breaks down. Thermal decomposition हमने पढ़ी थी. And it will break down and give you carbon dioxide. So जब आप उसको हीट करोगे तो उसमें से carbon dioxide भी निकल जाएगी अगर आपने बहुत ज्यादा हीट कर दिया. सोडियम एंड पोटेशियम के केस में ऐसा नहीं होगा. IGCSE people know that lithium के केस में भी breakdown होगा. The container and crystal were heated, ठीक है. Describe the appearance of sodium carbonate crystal after heating. After heating तो crystal क्या, वो product उसमें से water चले गया है तो उसका color क्या होगा? White. और वो होगा क्या? Powder या solid. And that is what we'll write, white solid. Okay. Calculate the mass of sodium carbonate after heating. अभी हमारे पास mass क्या है? This is the container plus carbonate. And what is the mass of just the container? 5.83. So we'll subtract this now. So 7.35 minus 5.83, 1.52. So this is what you have after removing all the water. And this is what you have while the water was still there, 4.04. इसमें water है और इसमें water नहीं है. तो technically water कितना था? 4.04 minus 1.52. क्योंकि this is pure salt and that was salt and water. So when we subtract these two, we get 2.52. So 2.52 is water and this is just the salt. Mass आ गया? Ratio निकाल लेना एंड पे. You can even predict कि अगला step क्या होगा. Relative mass निकलवा रहा है, MR. So MR of this is going to be 2 sodium plus carbon plus 3 oxygen. And for water it's 2 hydrogen plus oxygen. देखिए अगर आपको याद भी है ना तो अच्छी बात है क्योंकि एक मार्क के क्वेश्चन में हम कितनी वर्किंग कर लेंगे. So I think 106. Let me confirm. Yes, 106. I mean, I'll answer your question in a bit. Okay, so I have the MR, I have the mass, and now I have to find number of moles. कैसे निकालूंगा? Mass है, sodium carbonate का mass था 1.52 और water का mass था 2.52. इसको divide करूंगा 106 से, इसको divide करूंगा 18 से, because I need to figure out the number of moles. So 1.52 divided by 106, that gives me 0.014. And 2.52 divided by 18 gives me 0.14. बहुत simple answer हो गया. Now I have the moles, I just need mole ratio. So 0.014 for salt and 0.14 for the water. So how do you get the ratio? You divide by the smallest, 1:10. So X is 10 and we've done it. Okay. So that is how we get, like this is a picture of how you're going to be tested in ATP for moles. Of course, there are many other questions, many other types of questions, but I would suggest कि अभी आप moles को इस तरह से practice करें from the worksheet. Okay.